आज मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा डॉक्टर जाकिर नाइक की कि किसने सवाल किया है कि अल्लाह ताला इतना बड़ा पत्थर बना सकता है कि वो खुद भी नहीं उठा सकता। तो आइए दोस्तों पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर उससे बात करते हैं। Shamir from Kerala, India. Sir, one atheist has asked that can God create a heavy rock that he himself cannot lift? This is a common question that was asked to me also in my school days and my college days, that can God create a rock which he cannot lift? To reply to this question, I normally ask that atheist, that do you know how to drive? And he says, yes, I know how to drive a car. Can you take a left turn? Whenever I tell you, whenever you tell me I can take a left turn. You know how to drive a car? Yes. Can you take a right turn? Whenever I tell you, yes, whenever you tell me I can take a right turn. The person is expert in driving a car, or if he's expert in riding a motorcycle, okay, tell him. Can you take a left turn whenever I tell you? When you come at a crossroad, yes, I can take a left turn whenever you tell me, whenever I come at a crossroad. If you come at a crossroad, if I tell you right turn, will you take a right turn? He said, yes, I can take a right turn. I said, okay, now, good. Now when you come at a crossroad, take a left-right turn. The atheist will say, what is a left-right turn? Take a left-right turn. He will say, I cannot take a left, but just now you told me, you can take a left turn whenever I tell you, you can take a right turn whenever I tell you, now take a left-right turn. Then he understands what I'm telling him is illogical. Yes, he can take a left turn whenever he wants. He can take a right turn whenever he wants. But left and right are two opposing things. You cannot do at the same time. So if you ask, can God create anything? He said, yes, God can create anything. Can he lift anything and everything? Yes, he can lift anything and everything. Can he create a rock which he cannot lift? It is illogical. Yes, God can create whatever he wants. Yes, he can lift whatever he wants. Now you're telling, can God create a rock which he cannot lift? So I asked the atheist, why don't you take a left-right turn? It's like telling that can God create a tall, short man? Yes, God can create a tall man, he can create a short man. Can he create a tall, short man? They are two opposing things that are meaningless. Can God make a fat, thin man? God can make a fat man. God can make a thin man. God can make a fat man into thin man. He can make a thin man into a fat man. But fat, thin man, these are illogical things. So the question is illogical. The atheist doesn't know the qualities of God. Yes, this question can be asked to a human being, no problem. Because a human being cannot create everything. A human being cannot lift everything. So if this question is asked to a human being, it makes sense. But the atheist doesn't know the concept of God. That's the reason he's asking this question. So I asked that atheist, can you take a left turn? He said, yes. Can you take a right turn? He said, can you take a left-right turn? He says, no. So now he's trapped. So similarly, this question saying, can God create a heavy rock which he cannot lift is an illogical question. So you can answer an illogical question by asking an illogical question back to the questioner. And this way, inshallah, he will realize his mistake. So Allah subhanahu wa ta'ala is all powerful. He can do what he wants, but he will not do ungodly things. Hope that answers the question. दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है, आप लोगों ने दोस्तों क्वेश्चन भी सुना है और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी आप लोगों ने सुना है। तो बहुत बेहतरीन जवाब जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा। बहुत से लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जिनके जहनों में कुछ अजीब और गरीब किस्म के क्वेश्चन पैदा होते हैं। अल्लाह ताला सब कुछ पे जो है वो हाकिम है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर इंसान की बारी आ जाती है लेकिन इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन बहुत से लोगों के जहनों में ये अहमकाना जो है क्वेश्चन आते हैं। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो वाक़या सुनाया है कि मुझसे किसी ने गाड़ी में क्वेश्चन पूछा कि अल्लाह ताला ऐसे पत्थर बना सकता है कि वो खुद भी नहीं उठा सकते। तो वो गाड़ी चलाता, तो मैंने उससे कहा कि आपको गाड़ी का जो तरीका है वो तो सही तरीके से आता है। तो उसने कहा कि हाँ, मैं गाड़ी चलाने में मैं माहिर हूँ, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही चलाऊँगा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहले उससे कहा कि आप दाएँ मुड़े, तो वो दाएँ मुड़ गए। फिर मैंने उससे कहा कि आप बाएँ मुड़े, तो मैं बाएँ मुड़ गए। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप सीधा जब स्पीड में जाओ, वो आपने अभी दाएं भी मुड़ना है डायरेक्ट और दब बाएं भी मुड़ना है। तो वो हैरान रह चुका है कि मैं अभी दाएं कैसे मुड़ूँ, बाएं में ये मैं एक साथ नहीं कर सकता हूँ।
तो शायद जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जिस बंदे के साथ मैं गाड़ी में सफ़र कर रहा था, जिसने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, तो उसके अपने उसको सवाल का जवाब मिल गया था। तो दोस्तों अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है, अल्लाह ताला सब कुछ पे हाकिम है, ये दुनिया उसकी है। सिर्फ नहीं कर सकता तो इंसान ही नहीं कर सकता दोस्तों। ये कुछ लोगों की अहमकाना बातें होती है और उन लोगों को समझ नहीं आता कि हम किस तरीक़ों से वो बातें निकाल कर, जब अल्लाह ताला दोस्तों ये सारी दुनिया बना सकता है, ये सारे मखलूक बना सकता है, इंसान बना सकता है, हैवानात बना सकता है, सारी दुनिया सारे सियारे बग़ैर किसी दोस्तों किसी भी कुछ ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो कि उसको सहारा दे, बल्कि ये सारे सियारे को आप लोग देखे, सूरज को देखे, ये सारे आसमान पे जो है वो अल्लाह ताला की नेमतें हैं दोस्तों। अल्लाह ताला के हुक्म से खड़े हैं, सूरज देखे, सियारे देखे, ये सारी जो अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला के लिए कोई किसी चीज़ में भी मुश्किल नहीं है। बट ये लोग जो है कुछ ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं जहनों में कुछ ऐसे अजीब व गरीब क्वेश्चन लेके घूमते रहते हैं कि हम किस तरह जो है वो इस्लाम पे नुक्ता नज़री करे या किसी और वजह से या ये या वो, बस इस तरह अपने आप से बातें उठाते हैं और फिर लोगों के सामने पेश करते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक का भी जो जवाब था वो भी आप लोगों ने सुना है, तो बहुत बेहतरीन जवाब था दोस्तों कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला की सारी दुनिया पर हुकूमत करता है। आप लोग देख सकते हैं कि दुनिया में जितने भी मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा की है, दुनिया अल्लाह ताला ने पैदा की है दोस्तों, जितने भी इंसान अल्लाह ताला पैदा करता है, और फिर जितने भी ये सारा सिस्टम चालू है, सूरज निकलना, धूप वगैरह, बारिश, पानी, ये सब कुछ, समंदर, ये सब कुछ अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला के लिए ये छोटी छोटी बातें हैं, ये कुछ भी नहीं है दोस्तों। अल्लाह ताला बहुत कादिर ज़ात है, अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। लेकिन जो लोग यही बातें करते हैं तो मैं उनको यही बताऊंगा कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा ज़ात है, बहुत बड़ा ज़ात है कि उसके साथ कोई भी ऐसे मुकाबले वाला नहीं है। जैसे कि आप लोग के जहनों में ये अजीब और मकाना किस्म के क्वेश्चन होते हैं, तो बराए मेहरबानी कि हमारा अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। अगर आप उनकी नेमतों के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे कि ये दुनिया कैसे जो है वो पैदा हुई, ये सियारे, ये सूरज, ये चाँद, सितारे, ये सब अल्लाह ताला की जो है वो चीज़ें हैं उसने कायम की हुई है, तो इससे बड़ी जो है आपके लिए एग्जांपल और चीज़ क्या हो सकती है। तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो है बहुत बेहतरीन जवाब दिया और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी कीमती हमारे साथ जरूर शेयर करें। वस्सलाम।